तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आप आज वर्नियर कैलिपर वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द डायमीटर of a spherical object. Diameter of a spherical object being measured with the help of Vernier Callipers. Suppose is 10 VSD are equal to 9 MSD. The least count in the MS is 0.1 cm and 0 of the VS is at x equal to 0.1 cm where the jaws of Vernier Calipers are closed. If the main scale reading for the diameter is m equal to 5 cm and the number of coinciding Vernier division is 8, then the measured diameter after zero correction is. So okay, let's start with this one. With this part which says 10 VSD are equal to 9 MSD. Okay, so accordingly we will write so 10 VSD equal to 9 MSD. That means 1 VSD equal to yes. So least count will be equal to minus 1 VSD. Nine by 10 MSD. Okay, so least count is 9 by 10 MSD and least count of the MS is 0.1. So we'll put 0.1 here. तो ये वाला आंसर आ जाएगा इनटू 0.01 सेंटीमीटर, है ना। तो 0.01 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद रीडिंग करेंगे, रीडिंग होगा 5 + 8 × 0.01 ये, और ज़ीरो एरर माइनस होगा। यहाँ पे पॉजिटिव ज़ीरो एरर बोला गया है, इसका मतलब 4.98 सेंटीमीटर इज़ योर आंसर। 4.98 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 इज़ योर आंसर। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।